Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Teach You. In this video we are going to learn these words in Arabic with English and Urdu translation. इस वीडियो में आज हम इन अल्फाज को अरबी में बोलना सीखेंगे. So let's start. Yesterday. In Arabic, how can we say al-bariha और अम्स? अरबी में हम कैसे बोलेंगे अल-बारिहा और अम्स. इन उर्दू हाउ कैन वी से कल, गुजरा हुआ कल. यस्टरडे, अल-बारिहा, अम्स. फॉर एग्जाम्पल, दहबतु इलल मदरसा अम्स. आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे. इन उर्दू हाउ कैन वी से मैं कल स्कूल गया था. इन अरबिक, ذهبت إلى المدرسة أمس. I went to the school yesterday. The next one is tomorrow. In Arabic, how can we say غدا or بكرة? غدا or بكرة. In Urdu, how can we say कल, आने वाला, future. Today. In Arabic, how can we say al-yawm? Al-yawm. In Urdu, how can we say aaj? For example, today is Tuesday. In Arabic, how can we say al-yawmus salatha? Al-yawmus salatha. Aaj mangal hai. Today is Tuesday. Every day. Every day. In Arabic, how can we say kul yawm? Kul yawm. In Urdu, how can we say har roz? Week. In Arabic, how can we say usbu'? Usbu'. In Urdu, how can we say hafta? Week, usbu'. Last week. In Arabic, how can we say al-usbu' al-mazi? Al-usbu' al-mazi. In Urdu, how can we say पिछला हफ्ता? Month. In Arabic, how can we say shahr? Shahr. In Urdu, how can we say mahina? Year. In Arabic, how can we say sana? Sana. In Urdu, how can we say saal? Saal. Year, sana, saal. So friends, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. If you like this video, please share and subscribe my channel. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.